हेलो एवरीवन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए जो स्पेशल बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए है यूट्यूब पर, उसका ये नेक्स्ट डिक्टेशन है। आप लोग इस डिक्टेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखिए। उसके डिक्टेशन ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक दो और भी गुड न्यूज़ है जो कि बोल रहा हूँ। अभी इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। In order to satisfy ourselves, we had summoned the relevant record, which has been produced by the learned additional Chief Standing Counsel, and on a perusal thereof, we find that after submission of the reply by the petitioner to the charge sheet, no date was fixed by the enquiry officer for holding any enquiry, nor any enquiry was held by him. No material has been produced before us by the learned additional Chief Standing Counsel showing any enquiry having been held by the enquiry officer as is required under law. It appears that the enquiry officer has prepared and submitted the enquiry report straight away after submission of reply by the delinquent. The documents placed before us by the learned additional Chief Standing Counsel reveal that the enquiry officer issued a letter dated 18th July 2011 annexing therewith the charge sheet to the petitioner, seeking his reply to the same by 10th August 2011. By the said letter, the petitioner was also required to inform as to whether he wanted any personal hearing and also if he wanted to examine and cross-examine any witness, then the name as also a brief note on the points on which such examination or cross-examination was required. It was stated that if the reply was not submitted, then it would be deemed that the petitioner had nothing to say in respect of the charges, and accordingly the inquiry would be conducted and the state government would be informed. The contention of the learned additional Chief Standing Counsel that as the petitioner did not state in his reply that he wanted any personal hearing, nor did he mention the name of any person whom he wanted to examine or cross-examine. Therefore, the enquiry officer prepared the enquiry report and submitted the same before the state government. Learned additional Chief Standing Counsel contends that sufficient compliance of the rules of procedure as prescribed under law has been made for imposing major punishment, and principles of natural justice were duly adhered to. We are unable to accept the contention of the learned additional Chief Standing Counsel. Even if the delinquent employee does not request for personal hearing, the burden of proving the charges normally being upon the department, the enquiry officer was under obligation to fix a date for such enquiry with information to the delinquent and to conduct enquiry wherein he was
required to examine documentary as well as oral evidence in. अभी ये डिक्टेशन आप लोगों ने लिख लिया है। अभी इस डिक्टेशन के जो आउटलाइन्स है उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, रिव्यू कीजिए, और जहाँ जहाँ आप लोगों को लगेगा कि ये डिक्टेशन का जो ये आउटलाइन है, ये आउटलाइन आपको ठीक ठाक से आप लोग नहीं बना पाए तो उसको गोल कीजिए और रख दीजिए। देन आप लोग जो जो ठीक ठाक लिखे उसको आप लोग टाइप करने के लिए शुरू कर दीजिए। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और जो जो आप लोगों ने गोल गोल किया है तो उसको मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब डिक्टेशन लिखने शुरू कर देंगे तब अगर एक डिक्टेशन खराब आया है तो उस डिक्टेशन के लिए आप लोग अगर सोचते रह जाएंगे तो टाइम भी अपने आप ही चला जाएगा। तो उस डिक्टेशन को आप रहने दीजिए और अच्छे से ट्रांसक्राइब कीजिए। पूरा ट्रांसक्राइब करने के बाद भी आपका जो जो गलत हुआ उसका, अभी इंग्लिश में जो जो गलत हुआ, क्या क्या पंक्चुएशन मिस्टेक आया, क्या क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक आया, क्या क्या आपका एक्स्ट्रा वर्ड आपने लिख दिए, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये सब कुछ आप लोग हमारे स्टेनो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, वहाँ पर सेम सब कुछ मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन ये सेम ऐसे ही प्रोसेस आप लोग फॉलो कीजिए तो आपका ज़रूर इम्प्रूव होगा। और देन जो जो मिस्टेक हुआ, जो जो आप लोगों ने देखा कि ये गलत हुआ, उसको फिर से रिपीट कीजिए, उसको अच्छे से फिर दोबारा लिखिए, फिर नेक्स्ट आप डिक्टेशन सुनिए और अच्छे से लिखिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूव होगा। और इसके साथ आप लोग डेली हमारे साथ जो लाइव डिक्टेशन है वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा ज्वाइन होना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, सॉफ्टवेयर का भी लिंक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे आप लोग विजिट कीजिए और सॉफ्टवेयर और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को डेली 6 बजे, आप लोगों को सुबह 6 बजे आप लोग क्लास कर सकते हैं। 6 AM to 7 AM लगभग हमारा क्लास होता है, जहाँ पर लीगल डिक्टेशन, मिक्स डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन वहाँ पर रहते हैं और आउटलाइंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस की या क्लास की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ते है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमारा मेन मोटिव है। तो और चैनल पर, यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो हम लोगों को मोटिव भी मिल जाए कि हाँ, और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं। तो हो सकता है तो आप लोग अगर अच्छे लगे तो ये आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी कोई फोर्स नहीं है, आपका हिसाब, आपका मर्जी से आप कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको अच्छे से एक नौकरी आप लोगों को लेना ही है, यही हम लोगों का सबका मोटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।